ভারতে জ্বালানি ব্যবহারের 1/4 খরচ হয় আমাদের ঘর বাড়িতে। গত এক দশকে গৃহস্থালির জ্বালানির চাহিদা বেড়েছে 70 ভাগেরও বেশি। দ্রুত নগরায়ন এর মূল কারণ। কিন্তু আধুনিক অনেক নির্মাণ সামগ্রী ও নকশায় তাপমাত্রা, বায়ু চলাচল, ছায়া, বাতাস প্রবাহ ইত্যাদি দিকগুলো উপেক্ষিত থাকে। স্বস্তির জন্য তাই আমরা বেশি বিদ্যুতের ব্যবহার করি। কিন্তু যদি ভিন্নভাবে ঘর বানাই, প্রাচীন নির্মাণ পদ্ধতি ব্যবহার করে কি আধুনিক মানের বাড়ি তৈরি করা সম্ভব? স্থপতি কৃত্তিকা ভেঙ্কটেশ সেই পথই খুঁজে পেয়েছেন। চেন্নাইয়ে তার দল শতাব্দী প্রাচীন পদ্ধতিতে মাটির বাড়ি তৈরি করে, যেগুলো পরিবেশ বান্ধব, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী। பெரிய கேள்வி என்னன்னா আমার একটা সহজ প্রশ্ন ছিল, আধুনিক বাড়িগুলো আমাদের আবহাওয়ার জন্য উপযুক্ত না কেন? কেন ভেতরটা সবসময় গরম থাকে এবং এত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন কেন? অন্যদিকে গ্রামের বাড়িগুলো স্বাভাবিকভাবে ঠান্ডা ও আরামদায়ক থাকে কিভাবে? ஒரு பேசிக் কোয়েশ্চেনல இருந்து ஆரம்பிச்சு তিনি ব্রিটেনে জন্ম নেওয়া স্থপতি লরি বেকারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বেকার মহাত্মা গান্ধীর সরলতা ও টেকসই জীবনের আদর্শে বিশ্বাস করতেন। কৃত্তিকাও তার মতো কম খরচের স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার শুরু করেন এবং প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস ব্যবহার করেন বিদ্যুতের খরচ কমানোর জন্য। এখন পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় 20টা আবাসন প্রকল্প ডিজাইন করেছেন। প্রচলিত নির্মাণ কাজে এত বালি আর সিমেন্টের ব্যবহার দেখে অবাক হয়েছিলেন কৃত্তিকা। கான்கிரீட் কংক্রিট নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে বুঝলাম পরিবেশের জন্য এটা খুব একটা ভালো উপকরণ নয়। ஆல்டர்னேட்டிவ் তাই বিভিন্ন পদ্ধতি আরো கொஞ்சம் উন্নত கொஞ்சமா করার இந்த চেষ্টা টেকনিক্স করলাম। রিফাইন பண்ண ஆரம்பிச்சேன்। তার দল সিমেন্টের ঐতিহ্যবাহী বিকল্প ব্যবহার করে, কারণ সিমেন্ট উৎপাদনে প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়। ஆக்சுவலா சிமெண்டோட ரா সিমেন্ট কিছুটা மெட்டீரியல் চুনাপাথর দিয়ে சுண்ணாம்பு তৈরি হয়, தான் তাই அதை সিমেন্টের বদলে ப்ராசஸ் பண்ணி পুরনো தான் প্রথার சிமெண்ட் பண்றாங்க চুন ভিত্তিক ஆக்சுவலா நம்ம মিশ্রণ ரா ব্যবহার மெட்டீரியல் করি। யூஸ் பண்றோம் প্রথমে কাঁচা চুনাপাথর சுண்ணாம்பு সংগ্রহ கல்லு করি, மாதிரி তারপর பேக்ல সেগুলো வரும் তীব্র நமக்கு তাপে சிமெண்ட் மூட গরম மாதிரி অর্থাৎ அதை ক্যালসিনেট வந்து করি। நம்ம தாளிப்பாங்க এরপর தண்ணி এটিকে ஊத்தி হরিতকি தாளிச்ச গাছের உடனே அது ফল வந்து থেকে তৈরি গাজানো லூஸ் জল ও ஆயிடும் গুড়ের அது সাথে கூட মেশানো হয়। நாளைக்கு அதை এই எடுக்கும்போது প্রাকৃতিক அந்த মিশ্রণটাই கருப்பட்டி সিমেন্টের கடுக்காவை বদলে ஊற জোড়া வச்ச লাগানোর தண்ணியை উপকরণ அதில் হিসেবে ஊற்றி ব্যবহার করা மிக்ஸ் হয়। பண்ணி சிமெண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க பிரிக் லே பண்ணதுக்கு বাড়ির ভিতের জন্য ইস্পাতের কাঠামো, পাথরকুচি আর সিমেন্টের বদলে ব্যবহার করা হয় গ্রানাইট। দেয়াল তৈরি করা হয় মাটির ইট দিয়ে। কাঠের বিম আর খুঁটি বাড়িকে মজবুত রাখে, সাথে আলো বাতাস চলাচলেও সাহায্য করে। பக்கத்துல எல்லா இடத்துலயும் சுண்ணாம்பு கிடைக்கும்। আমরা মূলত சுண்ணாம்பு raw স্থানীয় material easy-ஆ উপকরণই source ব্যবহার பண்ணிக்கலாம்। করতে চাই। ரெண்டாவது পুরনো பழைய কাঠ மரங்கள், আবার எல்லா ব্যবহার பழைய করি। வீட்ல அந்த চুনা ஊர்ல পাথর இருக்கிற ও பழைய অন্যান্য மரங்களை জিনিসও எடுத்து সাধারণত So, নির্মাণ முழுக்க স্থলের முழுக்க அந்த 15 থেকে சைட்ல 20 இருந்து ஒரு কিলোমিটারের 15 মধ্যেই to পাওয়া 20 যায়। কিলোমিটারஸ்க்குள்ள ஓரளவுக்கு সোর্স பண்ணிடலாம்। ভারতের মতো একটা উন্নয়নশীল দেশে প্রতি বছর আনুমানিক 50 কোটি টন নির্মাণ ও ভাঙা গড়ার বর্জ্য উৎপন্ন হয়। কাদামাটি ও প্রাকৃতিক জোড়া লাগানোর উপাদান দিয়ে তৈরি কাঁচা ইট পুনর্ব্যবহার করা অনেক সহজ, পরিবেশের জন্য ভালো, তবে এই ধরনের নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা দরকার। கட்டு வேலை போட்டாக்கா ஒரு ஃபினிஷிங்காக সাধারণ இருக்கணும். কংক্রিটের அப்படியே কাজের கட்டு মতো வேலை எல்லாமே கரெக்டாக এখানে இருக்கணும். বাইন্ডিং নিখুঁত அங்கேருந்தா হতে ஒரு হয়। சிமெண்ட் অনেক வேலை শ্রমিক போட்டோம்னாக்கா কাজটা கொஞ்சம் அப்படி ছেড়ে இப்படி দেন, முன்ன பண்ண இருந்தாலும் কারণ பூசிடும் সিমেন্টের கொள்ளும். কাজে இது பூசில்லாத এতটা সূক্ষ্মতার பைண்டிங் প্রয়োজন হয়। ஒர்க்குன்றதுனால ஃபினிஷிங் பண்ணி তবে கரெக்டாக আমার এই பொறுமையாக কাজটা போட்டாங்க. আর ஆர்ட்ஸ் চ্যালেঞ্জটা காலத்துல ভালো লাগে। பிடிக்காதவங்க போயிட்டாங்க. நானும் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இருக்கிறேன். இது வந்து திருப்பூர்ல இருக்கு। তিরুপরুর இந்த এই வீடு, প্রকল্পটা கருங்கல் তিনতলা একটা வச்சு বিল্ডিং, foundation பண்ணிருக்கோம்। সম্পূর্ণভাবে সিমেন্ট বা G+2 কংক্রিট ছাড়া floors নির্মিত। பண்ணிருக்கோம்। ஒரு கம்ப்ளீட்டா லோட் பேரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்। এটাকে கான்கிரீட் পুরোপুরি সিমেন্ட்லாம் পরিবেশ இல்ல। বান্ধবভাবে ডিজাইন ஆல்மோஸ்ட் ஒரு করেছে। আউটডোর এনवायरमेंट எப்படி প্রকল্পটাতে கனெক্ட் প্রায় பண்ற மாதிரி 200 জন শ্রমিক কাজ করেছেন। குறைஞ்சபட்சம் ஒரு খরচ হয়েছে 200 প্রায় பேராவது இந்த பில்டிங்ல 90 ஒர்க் লাখ பண்ணிருப்பாங்க। টাকা। இந்த பில்டிங் ஆல்மோஸ்ட் 90 lakhs வந்துருச்சு। মাটির ইট ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, দিনের বেলা তাপ শোষণ করে আর রাতে সেটা ছেড়ে দেয়, ফলে বাসিন্দাদের বিদ্যুতের খরচ অনেক কমে যায়। யார் আমার முதல்ல মতে கான்கிரீட் মানুষের পছন্দ அவங்கலாம் বদলাচ্ছে। முதல்ல যারা আগে சுண்ணாம்பு কংক্রিটের বাড়ি வேணும்னு চাইতেন তারা আজ எப்படி মাটির இப்ப বাড়ি চাইছেন। ராகில இருந்து যেমন அரிசி மாறணும், ভাতের அதுக்கு வந்து বদলে আবার ராகி রাগি தெரியும்। খাওয়া শুরু இந்த হয়েছে। மாதிரி ஒரு சைக்கிள் மாதிரி தான் பார்க்கணும்।